अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है लेक 1 एटवुड मशीन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई प्रोफ सोबोर्नो सेक। ओके कर। So, let's start. Oh my god, I can hear the door opening. Who's entering? But anyway, let's look at that. Wait, late students? Why are students late to my class? By the way, can somebody go to the office for me? I have not received my homework booklets yet. We're going to say 2 forces. Oh! So, let's just hand them out. Can somebody hand them out, please? Take classes here too. Would you like that? Ruia College of the University of Mumbai. Hello class. Today we will be talking about the Atwood machine. A machine that is kind of like an elevator because it has 2 weights. A weight which carries the elevator car where all the people are standing, and the counterweight which makes the elevator go up or down. It was invented by George Atwood in 1784 by an English physician. So anyway, the Atwood machine is kind of like an elevator because these 2 weights are strung to a rope which is suspended by a pulley. So today we will be looking at if this kind of thing is a safe elevator. So by the way, you will only be using F equal M. Right, let's start. Oh, so we have drawn the diagram. We have finally finished the diagram. And so now what we're going to do is we're going to draw not just a diagram, but a force body diagram. Alright. So this diagram is going to look like, pulley. You have a rope. You have these 2 weights. And so, of course, we just take the 2 weights, we isolate them here. And these 2 weights, you have number 1. So number 1 would be mass number 1, which would be the weight, right? So, by the way, what is the mass of this thing? Well, that thing would be 9. Alright, so let's start. Oh my god, I can hear the door opening. Who's entering? But anyway, let's look at that. Wait, late students? Why are students late to my class? By the way, can somebody go to the office for me? I have not received my homework booklets yet. We're going to say 2 forces that we're pulling on it. First of all, M1G, which is FG. And then we have the rope tension, which would be FT, acting on it from above. So that's that. And then the exact same thing's happening to F2. So, okay. Now we have drawn the full force body diagram. And now what we will do is we know that delta F or F is equal to MA. So sigma F, I think I screwed up the F there, is equal to MA. So anyway, that's true for both sides. Oh my god, more late students? Jesus Christ. But anyway, that is what that is. So now we know that sigma F equals to MA, but we know that sigma F, what is sigma F? Well, we know definitely that tension and FD are both acting on it from our force body diagram. So we put that as all our forces there. So I guess that we can write that. And by the way, with the free body diagram, let's call it the force body diagram. I have a friggin' frog in my mouth. But anyway, we have F. Okay, so we have written the net force. Alright, so now we can continue on with this. So what we're going to do is, oh my god, I have a friggin' frog in my mouth. Force. But anyway, we have Ft minus Fg is equal to m. The thing is, acceleration is negative since Ft is actually less than Fg. Didn't you know that? So that means that acceleration is negative, so we will negate it for this part. And also, we will expand Fg and bring it to the other side, which gives us positive M1g on the other side. Alright, so we are making progress. So we will leave it at that for the first one, but for the second one, we also have to do everything for the second one. So we know that F net is not just
2a, by the way, why am I, oh yeah, I don't really like using sigma, screwed me up the first time anyway. But anyway, let's look at what fnet holds for us. So we know that fnet, of course, is ft again, minus fg. But this time, this means that fg is actually less than ft. So since ft exerts more force, then that means that a is positive, and we are writing that second equation. Any thoughts? No. Alright, got it. So let's keep writing. And so that means that we have this equation. So we finally finished writing net force. Alright, so now we will move on to bringing Fg to the other side and then expanding it. Alright, so we will expand it. So Ft, move Fg to the other side, Fg plus M2a, and we have expanded it. Now we will put these two together in a cool looking system of equations. So you should know what a system of equations is, and now let's begin. Alright, so Ft is equal to mg plus m2a, and then we have, well, Ft is equal to, let's put the m2 on top, so that's what we're gonna put there. And we know that we want to solve for acceleration. So what we're going to do, we'll go through with the system of equations, see what it gives us, and then finally we will try and solve the acceleration from the remaining equation. So let's write down what we have over here. So that's our first equation done. Now let's write the other one on the bottom. And so m1 and then m1g minus m1a, and we have done the bottom. Now it's time to create the system of equations, and I think I screwed up the little underline, but let's just fix that one. And now let's add these. So we'll actually cancel out all of that stuff that we don't actually need, and now we get m1g. And then we actually that's minus m1g, sorry, and then plus m2g. So g is m1 minus m1 plus m2. So we did that, we factored out, and we also factor out on the other side, giving us this monstrosity. But now we will divide both sides by m1 plus m2, thereby isolating acceleration. So now we can finally peacefully solve for acceleration and plug it. Alright, we divide that by m1 plus m2, and we have almost got our answer. We can now peacefully solve for a. So we get a equal to g times m1 minus m2, actually, and then we divide m1 plus m2. So let's just look at that. So m1 plus m2, look at that. We have finally got the equation for our thing. And, oh my god, more late student. I did not expect this. Okay, let's just get the absent card. By the way, can somebody go to the office for me? I have not received my homework booklets yet. I really need someone to go to the office for me. Please? Thank you. Oh, I guess somebody already had the office booklets. So, let's just hand them out. Can somebody hand them out, please? Thank you. So, now, let's get back to our math. Alright, so what do we do here? Now, we have to plug in all our variables in that. Oh my god, no, my homework sheet. Okay, so the homework sheets have been dealt with. Now we are going to finish this. So that's equal to 9.8 times, 2, and then we divide that by, 9.7. That's going to be equal to 16. And then now we'll just cancel them out and make it 8. So 9.8, finally, over 8. So there's somebody out there, somebody have a... What is it? It's 1.22. For the answer, we've got 1.22. Now, I want to ask you one final question before I leave. Oh, oops, meter per second squared. Sorry for the unit. But anyway, I want to ask you one final question. Is this elevator safe to ride?
And probably you would answer yes, because it's well below the limit of 2 meters per second and 2.5 meters per squared second. Second squared, actually. So, that is the answer to our Atwood machine problem. Thanks, everybody! Soborno Isaac Atwood, who is known as the god of mathematics, became the youngest professor in the history of mankind. Hundreds. To Bari Science Lab to fall in love with math and science, especially programming. तो जी व्यूअर्स, मीना आपने देखा कितना इंटेलिजेंट बच्चा था यार। ये जो चीज़ मैंने देखी यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस बच्चे मैंने को, भी फर्स्ट टाइम देखा कि यार ये इतना इंटेलिजेंट है कि कुछ भी मतलब के वर्क यार अपने टीचर्स मतलब के कहीं भी जाके उनसे सवाल कर सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है हनी, हम बच्चे की एज देखो और ये कितना छोटा है। और ये आजकल के दुनिया में कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी के बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं ये बोलूँगा कि 2-3 साल की उम्र में तो उसको खाने का तरीका पता चल गया होगा कि मुझे खाना किस तरह यार एज नहीं, और जिस तरह ये सवाल कर रहा है, जवाब कर रहा है। अच्छा, मुझे हैरान कि ये भी हुई, ये ब्लैक बोर्ड पे अपनी थ्योरी दे रहा है और ये इनके जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी इनका दिमाग, इनकी आंखें कितनी तरफ लगी हुई है कि ये आ रहे हैं वेरी लाइट माय स्टूडेंट्स। और यानी हर किसी के बिल्कुल, और इतनी छोटी सी एज में और इतने माइंड रखना, इतनी आंखें चार रखना और इस तरीके के शार्प सवाल जवाब, ये वो, यानी इन्होंने कब पढ़ा होगा, कहाँ से पढ़ा होगा, किस तरह इनको नॉलेज मिली होगी, क्या इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे, क्या इनके घर का माहौल ऐसा होगा, या ये गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट तो है ही, नो डाउट, बट इनको दैट इज़ वेरी जीनियस मैन। ये तो इसमें कोई मतलब कि हम इसमें डाउट नहीं कर सकते कि यार ये कोई बहुत जीनियस है, मिसाल है, आजकल के लोग के लिए जिंदा मिसाल है। सीनियर टीचर बैठे हुए थे और वो बैठ के उनको मतलब अपना पूरा ये खुद सवाल जवाब कर रहे हैं वगैरह बता रहे थे। वुड मशीन यार, आप बिल्कुल आसान बात समझ नहीं सकते हो कि ये तो मुझे वो पिक्चर की तरह लग रहा है कि जैसे वो पिक्चर आई थी ना कि कोई मिल गया ऋतिक रोशन को, एलियन कुछ जादू की उस, अच्छा उसमें क्या पिक्चर के जरिए मैसेज दिया है। और ये भी, ये देखो, ये लोग हैं दुनिया में, ये भी एक मैसेज है पिक्चर में। उस पिक्चर में वो 10 स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व कर देता है सुनने के साथ ही। कि मुझे तो इस टाइप का कोई बच्चा लगा यार, मैंने बोला इतना बच्चा, मैंने बोला माशाल्लाह क्यूट भी, बोलने का स्टाइल, तरीका बहुत आला तरीके से ये समझाना, लिखना, थ्योरी देना। और इतने बड़े बड़े लोगों को आपने देखा, पूरी सीट इनकी भरी हुई थी, सब पूरा जो ये क्लासरूम था पूरा हाउसफुल था। इनके बावजूद और कुछ लोगों को, स्टूडेंट को रोक दिया गया था क्योंकि एंड चल रहा था। मुंबई यूनिवर्सिटी हाँ, एंड चल रहा था। मतलब कि उन्होंने बहुत काबिल बच्चा है बिल्कुल, और इसमें कुछ नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी तो इसकी एज होगी 12 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ईयर्स, इससे हाँ बस ये एज नहीं थी इनकी। जब 25 में जाएगा तो ये तो तबाही मचा देगा। टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएगा क्या दुनिया के अंदर की, कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, वो गाड़ियाँ उड़ा देगा। और ये तो होने चाहिए हमारे, देखो इस तरह जिस मुल्क में होते हैं उन मुल्क का नाम रोशन होता है। और इस टाइप के बच्चे नहीं, बड़े भी होने चाहिए। और चाहे अगर ये बच्चे, चलो इनको तो गॉड गिफ्ट है, इनको माँ बाप की दुआएं हैं, गॉड गिफ्ट है। और इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे, क्या पता। मुझे तो बार बार, मैं तो कह रही हूँ, सलूट है उस माँ बाप को जो ऐसा बच्चा पाया है। कुछ ना कुछ इनकी अच्छाइयाँ होगी जो आगे से ये इनका बच्चा इस तरीके से होगा, और जो लेकर चले होंगे, जो इनके माँ बाप से इनको दुआएं मिली है या क्या है, कुछ ना कुछ तो है। इस तरह जो ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं भाई, पैदा होता है तो कुछ बच्चे होते हैं अब नॉर्मल, उनका बिल्कुल नहीं रुका हुआ होता है। और वो चाहे जितने भी बड़े हो जाए, वो जितने भी बड़े कुछ 20 साल पीछे होते हैं, कोई 20 साल, कुछ 5 साल पीछे होते हैं, अपना किरदार अदा करता है। देखो बिल्कुल बच्चे ऐसे होते हैं, अल्लाह उनको इतना शऊर, इतना वो दे देता है
कि उनके माइंड इतना भर देता है कि वो 3 साल का होगा वो 18-20 साल वाली बात करेगा। बिल्कुल। तो ये हमारा ये अब हम ये तो ऊपर वाले की देन है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो किसी को कम देता है तो किसी को ज़्यादा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वीडियो आपको यकीनन बहुत 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 अच्छी लगी होगी और इसी तरीके की मज़े की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट से ही हम चलते हैं और इसी तरह की मज़े की वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।